We are now live. Assalamu alaikum and very good afternoon. Today we are going to explore a second version of the Career Zone series. Previously we discussed that the business transformer. ACCA ने एक रिसर्च की और डिफरेंट कैरियर जोन्स आइडेंटिफाई किए प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स के लिए और उन्हीं डिफरेंट कैरियर जोन्स के हवाले से हमारी गुफ्तगू अभी जारी है. आज का भी जो 30 मिनट्स वी विल बी स्पेंडिंग ऑन वन ऑफ द कैरियर जोन. देयर आर 5 कैरियर जोन्स. अभी हम उसकी डिस्कशन भी करेंगे. सो आज का जो कैरियर जोन जिस पे हम बात कर रहे होंगे दैट वुड बी द डिजिटल प्ले मेकर. As it sounds very techy, technology driven, but let's see how the professional accountant have to play their role. और जिस तरह आज से 20-25 साल पहले आप चले जाएं तो अकाउंटेंट के लिए कैलकुलेटर जो था दैट वाज अ मस्ट थिंग. और पिछले 10 साल में एक्सेल इज समथिंग व्हिच बिकेम अ सिनोनिम फॉर विद द अकाउंटेंट कि अगर अकाउंटेंट है तो एक्सेल तो आती है. इसी तरह द पीपल हु चूज to play a role in the digital side. So उनके लिए भी कुछ tools, कुछ frameworks वो एक important area है जिसको हमें explore करना है. Right, so if we can go with the slides here. So career zones, the digital playmaker, that's our topic today. Let me take you provide you a little bit context around it कि ये जो career zone था last time भी हमने इसमें बात की थी, but ये 2 minutes जो हैं would be a good refresher what ACCA is all about, where we stand and why we are talking about the career zones. और ACCA किस तरह determine करता है कि क्या चीज जो है वो आज होनी चाहिए या अगले 5-10 साल में क्या changes आएंगे. ACCA की 117 साल की history है. So we have seen as an organization, we have seen First World War, Second World War, the initial pandemic in early 1920s की जब हम बात करते हैं तो वहां से लेके आज तक जितने भी different situations आई हैं globally, recessions and the booms, ACCA has gone through that and there is a certain knowledge base which exists out there. There are almost 821,000 ACCA members and the future member, 10,000 practicing firm है, 114 educational institution के साथ partnership है, and 180 plus countries में ACCA की presence है इस वक्त. So if we put together that gives us enough room के दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है और उसको किस तरह आगे लेके चलना है. तो उसमें ACCA के व्यूज हैं जो इन सारी जगहों से कलेक्टिवली उन ओपिनियंस और पर्सपेक्टिव को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज किया जाता है और उसके बाद एज अ रिसर्च इनसाइट आपके साथ शेयर किया जाता है. ACCA प्रोफेशनल इनसाइट पे ईयरली बहुत ज्यादा फोकस करता है. दीज आर द प्रोफेशनल इनसाइट्स जो आपको प्रोवाइड करता है अ व्यू कि दुनिया में आगे क्या होने जा रहा है. तो एटलीस्ट यू आर अवेयर ऑफ इट कि क्या इनसाइट्स हैं जो मुख्तलिफ ओपिनियन मेकर, पॉलिसी मेकर्स वो शेयर कर रहे हैं ACCA के साथ. आप AI की बात कर लें, इकोनॉमिक क्राइम इन डिजिटल एज की बात कर लें, पब्लिक सेक्टर की बात कर लें और न्यू मॉडल ऑफ बिजनेस सपोर्ट या न्यू जो फ्यूचर बिजनेस मॉडल्स हैं उनकी गुफ्तगू कर लें, तो उन सब में आपको कहीं ना कहीं एक ACCA की प्रेजेंस नजर आएगी. जो कैरियर जोन्स की हम बात कर रहे हैं वो फ्यूचर रेडी अकाउंटेंसी की एक सीरीज है ACCA की प्रोफेशनल इनसाइट्स की, उसका टॉपिक है और उसमें से हमने इस टॉपिक को पिक किया हुआ है डिजिटल प्ले मेकर. सो देयर आर 5 डिफरेंट कैरियर जोन्स. अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो 5 कैरियर जोन्स की बात हो रही है. अश्योरेंस एडवोकेट्स होते हैं, बिजनेस ट्रांसफॉर्मर हैं, डिजिटल प्ले मेकर, डेटा नेविगेटर, सस्टेनेबिलिटी ट्रेल ब्लेजर. सो ये 5 की कैरियर जोन्स हैं जो एक सस्टेनेबल ऑर्गेनाइजेशंस को डेवलप करने के लिए गोइंग फॉरवर्ड यूज हो रहे होंगे. आज भी एग्जिस्ट करते हैं और गोइंग फॉरवर्ड भी यूज हो रहे होंगे. क्या बेनिफिट है इसमें लूजली स्ट्रक्चर करने का कि प्रोफेशनल अकाउंटेंट इन सारे एरियाज में ऑलरेडी काम कर रहे हैं. एज अ प्रोफेशनल अकाउंटेंट एक आपके पास कॉम्पिटेंसीज एग्जिस्ट करती हैं ACCA की. नाउ व्हाई दीज कैरियर जोन्स, क्या हेल्प है इसमें या क्या इसमें हिकमत है कि हम इन कैरियर जोन्स में लोगों को कैटेगराइज करें और उसमें फिर देख सकें कि वो किस कैरियर जोन में फॉल करते हैं और क्या गाइडेंस अवेलेबल है अगर करंट कैरियर जोन से किसी डिफरेंट कैरियर जोन में इफ समबडी वांट्स टू मूव. इसी तरह अगर आप प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स ACCA की वेबसाइट पे जाएं, नीचे लिंक भी दिया हुआ है पावर ऑफ फ्यूचर रेडी टैलेंट की, तो उसमें आपको
बहुत से रिसोर्सेज मिलेंगे कैरियर जोन के हवाले से। इसमें कैरियर जोन्स की डेफिनेशन भी शामिल है, इसमें पूरी रिपोर्ट भी है, इसमें पॉडकास्ट भी है, इवेंट्स भी हैं। सो आप इसको एक्सेस कर सकते हैं एज अ रिसोर्स बेस। अगर हम स्पेसिफिकली बात करें डिजिटल प्ले मेकर की, तो उसमें आपको एडिशनल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, द पावर ऑफ डिजिटल, द पावर ऑफ कनेक्शन, द पावर ऑफ एथिक्स। तो ये सारे रिसोर्सेज भी आपके लिए अवेलेबल हैं व्हेन यू आर लुकिंग एट द डिजिटल प्ले मेकर के हवाले से कि वे यू स्टैंड इन दैट। अब हम वापस आते हैं कि व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें कि हम किस कैरियर जोन्स में फॉल करते हैं। So ACCA qualification practically 12 competencies पे मुश्तमिल है. So 12 competencies which are the fundamental core for ACCA qualification. How we develop that competencies, that's developed through exams, through EPSM, through training, and then there are essential competencies like you can't miss out on those, and there are elective competencies like when you go for a specialization. So if you look at the essential one, that's include ethics and professionalism, governance, risk and control, stakeholder relationship management, leadership and management, and strategy and innovation. And all these essentials are not the technical one. So that's mean as a professional accountant, if you have to discharge your role, regardless what role you are in, these are the bare minimum essential competencies which you need to develop over the period, over the journey, exams, EPSM or experience की journey में आपने ये competencies develop करनी होती है. And then there are elective one, you choose to specialize in audit assurance, advisory or consultancies. अगर आप merger acquisition की बात करते हैं, corporate business reporting में, if you are going for a sustainability trailblazer की साइड पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको corporate और business reporting की बात आएगी. Financial management, if you're working in an investment industry, financial management is an important competency. Management accounting is all about the performance management and taxation. And there is some, although it's a elective one, data, digital and technology, but now it's becoming a highly recommended, regardless whatever specialization you choose, do look at the data, digital and technology side. ये एक बड़ी important competency है which is working across the specialization in today's world. ये 12 कॉम्पिटेंसीज आपने जहन में रखनी है और ये 12 कॉम्पिटेंसीज आप डेवलप करते हैं और इनमें से कुछ जो इलेक्टिव हैं उसमें फर्दर स्पेशलाइजेशन करते हैं जो आपके प्रोफेशनल लेवल के ऑप्शनल पेपर होते हैं. ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आप उसमें फोकस लेके आते हैं. देन इन 12 को आपने जहन में रखना है. देन लेट्स सी दैट व्हाट्स हैपनिंग in the economy right now, and the new terminology which we have started using is the exonomy. That's a practically we are talking about exponential economy, that things where the things which are going to be changed, जहाँ पे disruption आ रही है. इन सब चीजों को आप देखेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कि अब इकोनॉमी में आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की. एंड दैट ब्रिंग्स टू द सेकंड कंट्रास्ट, जहां पे आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की बात करेंगे वहां पे एक्सपोनेंशियल फेलियर की बात भी होगी. सो की डिसरप्टर्स अगर हम देखें तो डाटा की अवेलेबिलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, एआई, connected devices and people, quantum computing, all these things which are practically creating disruption, and they are the one which are driving disruption. और इसके अलावा digital currency है, blockchain है, 3D printer है, personal drone है, vertical farming है, healthcare है, self-driving, you name it, and there are a lot of technological development जो कि disruption लेके आ रही है. And what it's going to disrupt, so आपके buying behavior disrupt हो रहे हैं, access to information the way you used to have in past वो change हो रही है, decision making criteria change हो रहे हैं. आप बहुत दफा चीजों को डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द रिव्यूज जो कि आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है. सोशल इंटरेक्शन के मॉडल फेस टू फेस इंटरेक्शन से डिजिटल मीडिया में कन्वर्ट हो रहे हैं. आपकी लैंग्वेज अगेन इंग्लिश, उर्दू और साइन लैंग्वेज, आपके इमोजीज ऑल आर कमिंग बैक. रिस्पॉन्सेज एंड वैलिडेशन, अगर कोई चैलेंज आता है हाउ यू रियली कॉल इट आउट और उसको किस तरह आप वैलिडेट करते हैं, इंटरनेट पे बहुत कुछ आपको अवेलेबल है. पेमेंट का मैकेनिज्म, फिजिकल करेंसी से डिजिटल करेंसी की जर्नी एंड एक्सेस टू मार्केट. पहले आप एक ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात कर रहे हैं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद की, बट विद द ई कॉमर्स एंड विद द इंटरनेट आपकी मार्केट एक्सेस जो है वो सडनली ग्लोबल हो जाती है. सो दे आर ड्राइवर फॉर डिसरप्शन एंड दे आर सम एग्जांपल्स ऑफ कि चीजें डिसरप्ट क्या होंगी. अब जब हम डिजिटल प्ले मेकर की बात करते हैं एंड कीपिंग दैट 12 कॉम्पिटेंसीज इन माइंड एंड कीपिंग दैट व्हाट्स गोइंग टू बी डिसरप्टेड, देयर इज अ कॉम्बिनेशन. जो 12 कॉम्पिटेंसीज की हम बात कर रहे थे उनका एक कॉम्बिनेशन जो है that's create a digital playmaker. So अगर हम इन 12 competencies में बात करें तो the one which are in a dark red,
and the one which are in a light red, these are the competencies you need on an everyday basis if you want to act as a digital playmaker. So आपको advisory and consultancy, that means आपको option analysis से लेके feasibility study तक and merger acquisition or market knowledge, data, digital and technology, strategy, innovation, leadership and management, stakeholder relationship management, governance, risk and control, management accounting, which is related with the performance management, and then the financial management to a certain extent. You need to draw on these competency on an everyday basis. And then the one thing you can't miss, सेंटर में हमेशा आपका एक कोर रहेगा एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म का. सो यू कांट मिस आउट ऑन दैट. सो रिगार्डलेस आप जिस मर्जी रोल में हो, जिस मर्जी कैरियर जोन में है, एथिक्स एंड प्रोफेशनलिज्म रिमेन अ सेंटर ऑफ दैट. सो जस्ट गोइंग बैक टू द कॉन्सेप्ट, सो आपके पास 12 कॉम्पिटेंसीज हैं एंड द कॉम्बिनेशन ऑफ दोस 12 कॉम्पिटेंसीज ब्रॉडली डिफाइन कि आप किस कैरियर जोन में बैठे हुए हैं. सो दिस इज द टाइम टू गो बैक एंड रिफ्लेक्ट कि वो क्या कॉम्पिटेंसीज हैं. उनकी डिटेल आपको ACCA की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, आपको ACCA की प्रोफेशनल इनसाइट में भी अवेलेबल है, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव के डॉक्यूमेंट में भी अवेलेबल है, आपको ACCA कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क के डॉक्यूमेंट में भी अवेलेबल है इनकी डिटेल्स. एंड यू हैव टू गो एंड डू अ सेल्फ एनालिसिस, और आपने रिफ्लेक्ट करना है कि इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन जो है इट्स क्लोजर टू व्हाट यू आर डूइंग टुडे एंड व्हाट यू बिलीव that this is the career zone you can map yourself in. So आपने वो career zones की mapping जो है अपने लिए वो जरूर करनी है, और एक दफा जब आप उसको map कर लेंगे तो आपको एक gap analysis करना है कि इसके लिए कौन सी competencies चाहिए थी और आप कहाँ पे हैं इस वक्त. अगर हम इसी डिजिटल प्ले मेकर को आगे लेके चलें तो यहाँ पे आपको अगेन ACCA की वेबसाइट पे बहुत से आपको प्रोफेशनल इनसाइट्स मिलेंगे जो वेरी स्पेसिफिकली रिलेटेड विद दिस पर्टिकुलर थीम. So embracing robotics, automatic during the evolution of finance, machine learning, professional accountants guide to distributed ledger and blockchain. ACCA and PwC ने मिलके एक रिसर्च की हुई है, the extent of the digital. So ये सारे वो resources हैं जो आपको एक flavor देते हैं कि अगर आप digital playmaker हैं तो these are the things which you are supposed to understand, or you supposed to at least build that as a knowledge base. So वही competencies use करते हुए, ये resources use करते हुए आप अपनी further इस area में grow करते हैं और अपनी understanding develop कर रहे हैं. What is the persona of the digital playmaker? अगर हम इसकी बात करें तो एक digital playmaker, a professional accountant as a digital playmaker, how does it seems, नजर कैसे आता है? So एक digital playmaker जो है वो technology evangelist होता है, रिगार्डलेस वो किस सेक्टर में काम कर रहा है. वो एक कोर फाइनेंस के रोल में काम कर रहा है, वो एज अ फॉर एग्जांपल इन अ कंसल्टेंसी और एडवाइजरी रोल में काम कर रहा है, एज अ टैक्सेशन का में काम कर रहा है, ऑडिट एश्योरेंस में काम कर रहा है, किस भी सेक्टर में काम कर रहा है. सो वो एक टेक्नोलॉजी इवेंजलिस्ट होता है जो कि अंडरस्टैंड करता है possibilities which technology can bring, regardless whatever you are doing. They understand that digital technologies continue to transform the smart automation agenda. Deeper expertise in a cognitive technologies that it will be increasingly priced. Robust technology roadmaps जो project management से related है, understanding के बहुत सी different technologies कैसे काम करेंगी, तो then they do understand that one. They understand the cloud and how the cloud is transforming the technology opportunity for teams. आप MS Office की बात कर लें, Office 365 की बात कर लें, MS Teams की बात कर लें, OneDrive की बात कर लें. So ये बड़े छोटे-छोटे tools हैं जो आप everyday use कर रहे होते हैं. They are all coming through the cloud one. Data governance. I think that's becoming more and more important कि आप data को understand कर सकें कि आपका master data, transactional data, structured data, unstructured data, how you really gonna govern that. वो capital में लिखा होगा, small में लिखा होगा, who can have access to data, data के अगर आप GDPR की बात करें, privacy के laws की बात करें, so there is a lot of stuff which is around the data governance, and the professional accountant is supposed to know about that. The people who are really want their career zone in it as a digital playmaker, and they help finance team to connect the processes and technology across the function. जैसे हम ERP की generally बात करते हैं, तो ERP is a very ideal example जहाँ पे finance and the rest of the organization, everything is basically mapped and done within the ERP. आप SAP ले लें, Oracle ले लें, there are a lot of open source tools also available जहाँ पे आप procurement से प्रोडक्शन और प्रोडक्शन से पेमेंट तक और इसी तरह ऑर्डर से लेके कैश की कलेक्शन तक के पूरे साइकिल टेक्नोलॉजी में मैप करते हैं. द पीपल हु आर वर्किंग इन अ डिफरेंट
or working remotely, they can keep inputting the data, or there are sensors which keep providing you the information, और उसकी बेस पे चीजें आगे चल रही होती हैं, और एज अ सिंगल सिस्टम यू कैन सी कि उसकी फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन क्या है या उसकी ऑपरेशनल इम्प्लीकेशन क्या है, और वहां पे आप अलार्म्स भी सेट कर देते हैं। तो वो जो पहले एक ऑडिट में सैम्पलिंग का कॉन्सेप्ट था, नाउ given these technologies available and these kind of processes which are already mapped and the data which is already processed through the system, आपको सैम्पलिंग की जरूरत नहीं पड़ती। आप पूरा पूरा डाटा जो है उसका डंप वो ले लेते हैं, और उसको फिर दे आर सिस्टम्स जिसमें आप उनको डालते हैं, दैट जनरेट द अलार्म्स कि कौन से एरियाज पे आपने फर्दर काम करना है, इफ वी आर लुकिंग एट ऑडिट एज वन ऑफ एग्जाम्पल। इसी तरह इसी रिपोर्ट में आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग डायग्राम भी मिलेगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उसकी बेसिस जो हैं, हाउ द डिजिटल प्ले मेकर्स आर लुकिंग इनटू दैट। सो आपके पास डीप लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग है, आपके पास एनएलपी की अंडरस्टैंडिंग है, मशीन लर्निंग की अंडरस्टैंडिंग है, एंड डाटा एनालिटिक्स पुट टुगेदर यू आर क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इंजन, and you are creating a use case for that. So there are a lot of sensors and the development in the technology जहाँ पे आपको information जो है वो खुद इनपुट नहीं करनी पड़ती, बल्कि बहुत से आपके सेंसर्स जो हैं विद इन द प्रोसेस दे आर पिकिंग अप इंफॉर्मेशन एंड दे आर फीडिंग द मशीन to learn better, and based on that learning they can create alarms and they can create that artificial intelligent engine जो कि आपको चीजों को एक्सट्रापोलेट करके बता सकता है, और आपको उसको खुद यूज केस डेवलप करना पड़ता है। दिस इज नॉट द सब्जेक्ट फॉर द टेक्नोलॉजी गाइज अलोन। जब भी आप इस तरह की गुफ्तगू करेंगे तो उसमें आपको सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज चाहिए। अगर आप फिनटेक की बात कर रहे हैं तो उसमें आपको यू नीड पीपल who understand the financial transactions better, and they can help the technology guys to develop those alarms and machine learning tools जो कि उस डेटा को जो कि डिफरेंट सेंसर से उनके पास आ रहा है उसको प्रॉपर्ली इंटरप्रेट कर सकें, और उसको they can make sense out of it and they can generate insight out of it as well. लेट्स सी कि एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग जो है एक डिजिटल प्ले मेकर के लिए, एक मिनिमम अंडरस्टैंडिंग किन एरियाज में जरूरी है। द कॉन्सेप्ट एंड द यूजर केसेस या यूज केसेस वी कैन से कि एआई का यूज केस क्या है, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां पे whether you need, और आपका जो डेटा है या जो आपकी कस्टमर इंटरेक्शन है, does it allow you and create an opportunity where you can deploy any AI based solution, blockchain, smart contract के concept, cryptocurrency के concept. So at least the use cases and the concept of these terms, these are mandatory for any digital playmaker to understand, reflect and explain, right? So आपके पास शायद टेक्नोलॉजी का वो टूल नहीं होगा कि आपने इसको बनाना कैसे है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क और यूजर केसेस जो है वो आपके पास बड़ा यूज केसेस जो है वो आपके पास बड़े क्लियरली डिफाइन होने चाहिए। डिजिटल ट्विन का कॉन्सेप्ट, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वन। बल्कि बहुत सी जगहों पे हम बात करते हैं कि अगर तो जो काम आप कर रहे हैं उसका एक डिजिटल ट्विन एग्जिस्ट करता है, दैट्स मीन you can perform the same task in a digital environment, then deploy it. और अगर आप एक ऐसा काम कर रहे हैं जिसका डिजिटल ट्विन आज एग्जिस्ट नहीं करता, then develop one because that's a great opportunity. So understand the concept of digital twin of anything which you are doing today, because either you or somebody is going to develop that in the future, and whoever develop it first, they are going to make a business out of it. मास्टर डाटा, ट्रांजैक्शनल डाटा, स्ट्रक्चर्ड डाटा, अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, सेंटिमेंट्स की जब हम बात कर रहे होते हैं तो these are the concepts which need to be understood, explained, and you should be able to reflect on that. Data governance का concept जो है, that's something which is important. Importance of the website, analytics, e-commerce, social and digital media, these are the subject of professional accountants now, really, because यही आपकी शॉप है, यही आपकी फैक्ट्री है, और यहीं से बहुत से जो आपके डिजिटल बिजनेसेस हैं वो रन हो रहे होते हैं। तो आपके सारे के सारे फ्लोज जो हैं यहाँ पे मैप्ड हैं। So those are the important concept and the tools which you need to understand conceptually. ERP, Power BI, MS Office, and there are a couple of other tools which you need to know. ये इसकी conceptual understanding नहीं चाहिए आपको. You should be able to use those. FinTech solutions, specifically payment world में क्या हो रहा है और उसमें कौन से ऐसे solutions हैं जो आप deploy कर सकते हैं. Cloud, understanding the like software as a service or infrastructure as a service or platform as a service. So ये cloud के concepts जो हैं इसको understand करना, और जो आपके relevant सर्विसेज हैं, जो आपके सॉफ्टवेयर्स हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, यू शुड बी एबल टू गूगल इट एंड फाइंड आउट कि ये मुझे एक चीज चाहिए, तो क्या ये चीज मुझे डिप्लॉय करनी है,
मुझे हार्डवेयर खरीदना है, लाइसेंसेस खरीदने हैं और एप्लीकेशंस खरीदनी है, या ये मुझे SaaS की फॉर्म में अवेलेबल है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस अवेलेबल है, और मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्यूटर्स पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, मेरा फोन और लैपटॉप और डेस्कटॉप इज गुड इनफ टू रियली प्रोसेस दैट, क्योंकि कंप्यूटिंग पावर भी मुझे नहीं चाहिए, लाइसेंसेस भी मुझे जो है बड़े लिमिटेड से चाहिए, और बाकी सारा इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट और सपोर्ट जो है दैट इज अवेलेबल इन अ क्लाउड बेस्ड सोल्यूशन. Total cost of ownership of technology, that's a some concept which you need to understand, क्योंकि अगर आप किसी client पे या अपने employer पे एक technology related project deploy करने जा रहे हैं तो उसमें से बहुत सी चीजें हम miss out कर देते हैं. जब भी आप technology का एक project या digital transformation में जाएंगे, so you will incur a certain cost, and that cost is going to increase. ये जो कॉन्सेप्ट होता है कि कॉस्ट कम हो जाएगी, वो नहीं होगी, वैल्यू बेहतर डिलीवर होना शुरू होगी, और वो जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है दैट हेल्प यू टू सर्व योर कस्टमर बेटर. लेकिन डेफिनेटली आपके लाइसेंसेस की, हार्डवेयर की कॉस्ट आएगी, और यू कैन डू मोर विद लेस, लेट्स पुट इट दैट वे, बट इट डजंट मीन कि आपकी ओवरऑल कॉस्ट जो है इनिशियल स्टेज पे बिल्कुल एलिमिनेट हो जाएगी. तो जब आप इसकी टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप का स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड how the technology is going to play its role. Ethical and compliances related issues, these are also important one. AI में अभी recently US में बहुत सी studies हुई हैं जहाँ पे decision making एक intelligent engine कर रहा था, but somehow the way the data was fed to that AI has got a natural bias, just because of the data which was fed to that engine that has created that biasness within that decision making or intelligent decision making. So आपको वो ethical dilemmas जो हैं in technologies के you have to understand, and जो आपका unconscious bias और data biased होते हैं उनको आपने understand भी करना है और उसको eliminate भी करना है. Right, so these are the fundamental areas which any professional accountant who is operating in a digital as a digital playmaker, these are the things which they need to really understand, or some of the areas they need to learn and become experts. Some are just the early stage understanding, but आप अगर एक business में, if you are acting as a digital playmaker, so these are the areas which are important for you to look at. और ACCA Global की वेबसाइट पे आपको इसमें से बहुत सा कंटेंट और रेफरेंस पॉइंट्स मिल रहे होंगे, और CPD रिसोर्सेज में आपको बहुत से रिसोर्सेज भी मिल रहे होंगे if you really want to learn about Power BI और MS Office और ERP के कुछ solutions हैं जो partners की साइट से भी आए हुए हैं, तो you can use those resources to develop that. And that brings us to a question जो हमें अपने आप से करना है. So हमने यहाँ पे देखा there are 12 competencies जो ACCA qualification aims to develop through exams, through EPSM, through experience. इसके बाद ACCA बहुत सी प्रोफेशनल इनसाइट प्रोवाइड करता है, so you can stay relevant and you can stay ahead. इसके बाद आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं once you are getting into the membership, और आप as a CPD आप उनको यूज कर सकते हैं. सो ये सारी चीजें आपके पास वन वे और अदर ACCA की साइट से अवेलेबल है. ACCA के अलावा भी बहुत से इकोसिस्टम्स हैं, आपको YouTube पे बहुत सा कंटेंट मिलता है. ACCA में जो है इट्स मोर स्ट्रक्चर्ड because it's specifically designed for ACCA members and future members. So it brings us to the two questions. Am I doing enough to stay relevant ahead of the curve? So do I know like where I am? So जो एक self reflection होती है different benchmarking की form में, तो that's a one question which I would like you to really look at. और दूसरा सवाल मेरा होगा और जो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, do I know as an individual what kind of future I want to build for myself and people around me? So ये दो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट सवाल हैं. जब आप कैरियर जोन्स की भी बात कर रहे हैं तो इवैल्यूएटिंग दैट कि किस कैरियर जोन में आप फॉल कर रहे हैं बेस्ड ऑन योर कॉम्पिटेंसी सेट जिसको आप एवरीडे बेसिस पे यूज करते हैं, एंड प्लस किस कैरियर जोन में आप जाना चाहते हैं, और उन दोनों के दरमियान जो कॉम्पिटेंसीज का एक गैप है या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज का एक गैप है, can you reflect on that? क्योंकि competencies तो आपने सारी develop की हैं. It's just that you are not drawing on those competency on an everyday basis. So that's bring me to end of my conversation, and we can go for some questions if we have few.
Hi, Sajid. Thank you very much. It was a very insightful presentation. We've received a lot of questions on different platforms since we were simultaneously broadcasting it to 4 different platforms on social media. So, first, let's take a question. This is from Usama Afzal. He's asking, Assalamu alaikum, sir, can I do ACC after BS Software Engineering? And let's club it with another question, which is asked by an ACCA student. Do ACCA students or professionals need to get some certifications in technology in order to become a digital playmaker, or is it something that is already is part of ACCA's framework of 3 E's? Thank you. I think from who can come and join ACCA, ACCA does not have any artificial barrier. So at any stage, at any age, with any background, you can come and join ACCA. I always encourage people to go and have a look at the ACCA website, which can provide you a guidance that at what stage you are and how it will work. The combination of technology and finance, that's becoming very, very common, and given the way the world is evolving, and it's becoming a more and more complicated in terms of financial transaction, and it's creating more opportunity with the combination of technology or understanding of technology. I think it's important where we can combine these. For ACCA student or member to become a digital playmaker, do they have to go and do some certification in the technology? It may add value, but it's not necessary. आपके पास जितनी अंडरस्टैंडिंग एज अ डिजिटल प्ले मेकर के लिए आपको चाहिए होती है, इस कैरियर जोन के लिए आपको चाहिए, वो आपको विद इन एसीसीए क्वालिफिकेशन एम्पली अवेलेबल है. और अगेन वी गो बैक टू फंडामेंटल, देयर 12 कॉम्पिटेंसी. इफ यू ड्रॉ मोर ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डाटा का जो कॉम्पिटेंसी है, उसको अगर आप देखेंगे और कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क में अपने सिलेबस और अपने एक्सपीरियंस और अपने परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव को उस लिंक में देखेंगे, तो यू विल सी that it's already available. You just have to draw on that, or you have to refresh that. उसके अलावा अगर आप certifications करना चाहते हैं, so that's always add value. It's always add value. It will never going to create a challenge there. But it's not necessary to become a digital playmaker. It's a senior role where you provide the guidance to the organization that how they should be looking at technology as an opportunity. Right, a very good advice. We should always encourage, pursuit of knowledge. But I think the better approach would be that you apply the knowledge that you have already Exactly. gained. So try to find platforms and avenues you can volunteer at an NGO and provide your services, and polish your competencies and expertise. So, Sajid, we have another question from Amir Suhail Rana. You shared a list of different competencies. So he's asking, do we need to focus on all of them, or we can just specialize on 1 or 2 points? There are 5 which are essential. So, as a ACCA member or future member, that's mandatory that you develop those 5 which are essential. Then we come to the 7 which are elective. So you have to pick 2 or 3 where you want to specialize. So competency at the knowledge level and the applied skill level, that's and up to the आपके जो mandatory exams है professional level पे SPL और SPR. So वहां तक आपके पास सारे के सारे 12 competencies जो हैं वो embedded होती हैं. उसके बाद जो आपके पास 3 एग्जाम्स जो आपने या 2 स्पेशलाइजेशंस आपने पिक करनी है, वो आपके पास एडिशनल कॉम्पिटेंसीज होती हैं स्पेशलाइजेशन के हवाले से. सो मेरी हमेशा सजेशन ये होती है कि 5 essential, and then data, digital, and technology. That's at least these 6 competencies you should really become expert, and then pick up the one where you want to specialize. But have a look at the all 12, because you have already up the initial exams may you have already gone through that. सो उसको मिस आउट करने की जरूरत नहीं है आपको. यू जस्ट हैव टू सी कि आपने किस कॉम्पिटेंसी पे कब कितना ड्रॉ करना है, आपने कितना यूज करना है, उसको डिप्लॉय कैसे करना है. सो इट्स एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज एट अ अर्ली स्टेज और एट एक्सपर्ट लेवल. सो वो आपने सिर्फ इस कॉम्बिनेशन को देखना है कि आपने किस में फर्दर एक्सपर्टीज डेवलप करनी है बाय प्रैक्टिसिंग दैट ऑन अ एवरीडे बेसिस. जी राशि. All right, thank you very much, Sajid. Very good advice. We have another question. This is by someone, probably he's an
China. So I'm not really able to read his name, but the question is very, very important. So he's asking, he or she is asking, what if a person is an ERP? You know, he's just starting out in his career and he's joined in the ERP. So how he can, he or she can make sure that they don't remain restricted to the competencies that are developed in an ERP role. How they can diversify as a professional, because you know, in his words, if one goes for ERP during training, will he be confined to the same competency throughout career? Because ERP market is a bit volatile and there is a big risk attached. Very true. Let me give my personal view on the ERPs. ERPs, the way it used to be 10 years back, is not going to be the same going in the future. You will get more open source data, you will get a different kind of cloud based solution, and then the ERP implementation will be very, very different compared to what we used to see. ERP solution implementation or working in a ERP advisory is a great opportunity because that helps you to see the organization end to end, because you are mapping that processes and the business in totality. End objective of any business is to really serve their customer base. So ERP, when you are implementing it, that's a one key focus which you have to, which should be forefront whenever you are doing anything, how you are going to create a wow factor for your customer. So that's help you to really create a very interesting mindset which normally accountants miss. So it's anything you do in your life, it's always about the wow factor for the customer end of the day. Now, go back to what you learn while you are doing a ERP or you are engaged in an ERP practice. You understand the stakeholder management, relationship management, because you are working across the functions. So this is the one competencies which need to be developed and reflected in your everyday life. Then there will be something which how you engage with them. So there will be ethics and the professionalism, and EPSM really help there to really understand the different scenarios. If you look at the governance, risk, and compliances, so definitely there's a lot of stuff which is related with that. And when we look at the data technology and digital side, so again, those are the competencies, governance itself, leadership as well in a situation one. Now, ERP gives you a very good base to develop all those competencies, but it does not restrict. I would again say it does not restrict that you should stay within the ERP unless until you will choose to. But from a reflection, that's important. When you are going and you are branding yourself and you are reflecting on your competency, how you reflect that. If everything goes back to the ERP configuration, then it's not the matter of whether you have developed the competency, it's how you are really engaging people and what you want to reflect on. It's not about the configuration. There's a lot of work which went in before the configuration, from engagements, the developing the project plan, then testing that, bringing the user on board. So there are a lot of people skill and the social skills you have developed. And then if it's particularly when you are implementing a finance related or planning related module, you are again going through a lot of different compliances, financial management, management accounting, as well as audit risk, assurance services. So I think there are a lot of things which while you are doing the ERP practice and implementation in a different industry, so there's a lot of business knowledge you gain as well, and you really start looking looking at the business in a very integrated way. And that's a one of a benefit when you are implementing ERP, because that's a one single view which help you to understand the integration of the organization, which can really create that wow factor for customer. So but it does not restrict anybody that they should stick in a within the ERP regime unless until they will choose to do so. Very well. Thank you, Sajid, for the answer. Though we've reached the end of the session, we've run out of time, but we'll just take one final question if you allow. Uh, Please. sure. Yeah, this is by Rayan bin Nasser. There's a comment. He's saying increased digitization would risk information security, like he's referring to cybersecurity. How we can avoid this risk? Does it mean we should go for manual ledgers compared to digital ledgers? What is your take on this? Uh, I think we cannot avoid risk. So first, we have to understand the concept of the risk. We have to evaluate the risk appetite of the organization, that where we stand. Going for a zero risk is a myth. You can't have a zero level of risk. There is a certain risk because you are running in a business. Going back to manual is not a solution. That's mean there's a lot of things which you may not be able to do
or serve your customer better. So then we come to that, how we really look at the information security, and it has got a different level of security we can talk about. It's a security around data, it's security around the information, it's security around the your processes, your IPs. So there are a lot of things which are, or even access to your hardware and your hardware access to others hardwares. So there are systems and the solutions which are available, so you can minimize the risk, but you cannot eliminate that, and that's not what can happen. It's again, I would say, zero tolerance for risk is not something which is real. So there will be a certain risk appetite, and based on the risk appetite you have to look at it. Let's look into financial, and anybody who's working in a banking side, their risk appetite around the data or the information security will be minimum compared to somebody who is working in altogether different area. Just imagine that somebody who's working more in a library will have a high risk appetite for the information security breaches compared to somebody who's working in a financial information. Right, there will be a different kind of risk and different risk appetite which they can sustain or not sustain. Right, so we have to look at the risk appetites, and then we have to try to build that. But going back to manual ledgers is not an option anymore. Going to a distributed ledger is maybe a one area to look at. It's provide you more secure environment to operate in, like blockchain or smart contracts. Absolutely. Forward looking is the key here. Thank you, Yeah, Sajid. And we should not think about eliminating risk. We can always mitigate risk and see and the real manage it. value. Manage it. Abs- Yeah, Absolutely. So we've yeah. run out of time, but any last comments, any closing remarks before we bid farewell, and also any resources that you want to reiterate for people to visit and use? I think the most important resource I always mention is the ACCA Professional Insight. Look at that page. There are a lot of resources which are available. There are a lot of insight which is available. There are CPDs which are available. For all members and the future members, we encourage that you build your relative knowledge around what's happening around the world and what kind of opinions exist out there. So Professional Insight is the one most important resource you should be looking at. Then one advice, that's a personal one. Whenever you are doing things, have your questions ready. Last time जब हम business transformer की बात कर रहे थे, तो you have to really answer a couple of questions to yourself. Nobody else is going to ask those questions. The one question is why you are doing it, what else you can do, what are the other options, is it the best you can do. So you have to build that habit where you go back and stay in a self accountability zone and reflect on that, how you are doing it and how you can improve tomorrow or day after or next hour. So that continuous learning and a continuous improvement is one of a habit I would suggest everybody should be building, and that will take change of a little bit behaviors and then building those behavior in everyday life as a routine, and that will become your habit. So look at the combination of behaviors, routines, and habits that is going to help you to really progress in the direction where you really want to move and to reach to your desired lifestyle. So routine, habits, and behaviors, these are the three terms which definitely I would like to look at. I would like you to look at. And then there are two additional words which I would leave you, is the ethics and the professionalism. So routine, habits, behavior, ethics, and professionalism, these are the five words I would say go and look at ACCA website as well as otherwise, and Google it and see how it can change your life and the life of people around you. Thank you very much, Sajid, for life changing closing remarks. And I thank everybody for joining us today. We'll be back with the session 3, in which we will focus on number 3. Part of our emerging career zones of opportunity. Yeah, So we'll be back soon. We'll announce the date on social media. We'll send an email. So thank you very much, Sajid, for your time. Thank you, everyone, thank for you. attending today's webinar, and we'll see you soon. Take care. Goodbye. Thank you very much. Thank you.